Hey, what's up, everybody? So today we've got Supratim with us. Supratim is a freelancer who's a service provider and an aspiring agency owner who offers media buying, marketing related services to people, especially people who are in digital product space, info product space. He offers media buying service, funnels, and landing pages kind of service. That's his products that he offers, the services that he offers. And he is here today on this call because he has been able to achieve 1.5 lakh with three clients currently as we are doing this. He manages these are monthly retainer clients, and he's been able to smash these numbers, helping these clients achieve success at the same time being a part of one of our mentorship programs. Supratim, I'm super proud of you. Amazing to see you here on this call with me. I want you to take over the mic and please tell everybody, whoever is watching this video right now, that where are you from? How did your journey of getting into freelancing or agency kind of a business model started? And yeah, how did it start? And just let's talk about that. Yeah. Thank you so much. First of all, I would like to thank you so much because without you, it was not possible actually. Because मेरे को नहीं लगता था कि 2-2.5 साल पहले ये पॉसिबल हो सकता है. Yeah. और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया मार्केटिंग जर्नी. उसके बाद मेरे को लगा डिजिटली कुछ करना है. एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. यहाँ पे डिजिटल का कल्चर उतना ज्यादा नहीं है नॉर्मली. एंड उसके बाद मेरे को लगा नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे डिजिटली करना है. उसके लिए मैंने आपके पास आया था. ठीक है. बट उसके बाद ये तो हो नहीं पाया एक्चुअली उसको कैसे करना है. बट मैंने उसके लगा कि चलो कोचिंग करते हैं. ठीक है, कोचिंग से लोगों को लेके आएंगे. फिर उसके बाद फेलियर. उसके बाद प्रोडक्टिविटी निश में मैंने ट्राई किया, उसमें भी फेलियर. उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में कोच कैसे बनना है, उसमें भी फेलियर. उसके बाद मैंने ट्राई किया फोकस और पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें भी फेलियर. और जो मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ टू फाइंड पर्पस बेसिकली, दैट इज आल्सो अ फेलियर. तो बट द थिंग इज दैट कि ये सारे चीजों में मेरे को दो चीज मेरे को समझ आ गया. मैंने थोड़ा सा स्किल डेवलप किया. वो है कि एड कैसे रन करना है फेसबुक, दैट्स द नंबर वन थिंग. लैंडिंग पेज कैसे बिल्ड करना है, वो चीज. ठीक है. एंड फाइनली उसी से आगे लगा कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है. और मैं एंजॉय करने लगा चीजों को बेसिकली. एंड फ्रॉम देयर थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग. दैट्स इट. Fantastic. Such an inspiring journey. Perfect example of resilience at its best, right? As like, if you look at problems like problems, and if you all that you focus is on problems, and all that you will see are problems. But if you change and shift your focus to solutions, then all that you're going to see are solutions. And as Tony Robbins always say, that life is not happening to you but for you, right? And look, here we are today doing this call. So amazing, super inspiring. So how many failures in total have you ever counted, roughly? Around 6 to 7. Wow. Well, these are, I think 6 is like 6 failures, like a magic number. Like, I don't want people to fail, of course, because it's hard to get, stand back up. But yeah, even I failed 6 times, right? It's the same number. So, and I've seen this pattern. A lot of people I see, they fail actually exactly 6 times precisely, and before they hit success. So failures, yeah, part of success equation. So let's talk about your journey of starting. As you thought of doing a digital coach, so you thought you'll launch courses. That's what you wanted to do. And then you tried doing it, did not work for you because you were doing it yourself. So you got into you became a part of our the mentorship program around the marketing, internet marketing concepts and the fundamentals and the foundations of media buying, ads, funnels, etc. that we talk about, all of that we teach usually. What was your journey before you came to me? So you came to me, but what happened before that? I want you to throw some light on it. If there was, you probably spent some money on courses and coaching programs and mentorship programs. If you did, then how many, how much, how many courses, how many times did you burn your hands? Just talk about that experience. So near about मैंने 1 lakh तो spend किया before joining IMN. Okay. And सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आज तक मैं स्टिक हुआ हूँ आपके साथ, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, मैं बताता हूँ. दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग. एंड उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी कितना सिंपल हो सकता है.
क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि कम्युनिटी खराब है दूसरे कम्युनिटी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जितना चीजों को सिंपल रखेंगे मेजोरिटी लोग उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, बेसिकली सीख पाएगा। एंड हमारा एफर्ट भी एग्जैक्टली मैंने वो चीज आपसे सीखा है कि हमारा एफर्ट चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए देना चाहिए। तो पहले एंड क्या हो रहा था जब आप दूसरे कोर्सेज जहां पे आपने 1 लाख प्लस स्पेंड करे, वहां पे क्या हो हाँ रहा था? वहां पे सिंपल नहीं था? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? हाँ, वहां वहां पे मैं आपको बताता हूँ, वहां पे एग्जैक्टली था, चीज था बट उतना सिस्टमेटिक नहीं था चीज, ओके। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था वहां पे, उसके बाद उतना क्लैरिटी नहीं होता था। सपोर्ट था बट फिर भी कंफ्यूजन रह जाता था। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी काम जो खुद प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिशनर हम जिसको बोलते हैं, वो चीज, और नॉर्मली जो लोग बुक पढ़े हैं या फिर किसी और कोर्स से उसको थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके उसको सिखा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि हम्म। बहुत छोटा छोटा माइन्यूट चीज होता है जो कि जो पहले था जो मेरे को नहीं मिल रहा था, एंड हम्म। यहाँ आने के बाद फिर मेरे को वो दिखने लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे को, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, सेल्स फनल का मतलब, पहले जब मैं आया था सेल्स फनल का मतलब मेरे को यही लगता था कि सेल्स फनल वो केरोसिन ऑयल होता है ना जिसमें हम वो डालते हैं, वो मेरे को लगता था कि सेल्स फनल वो तो फनल है, उसको हम हम्म। डिजिटली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मेरे को समझ नहीं आता था। बट थैंकफुली कि आपका जो कोर्स है उसके थ्रू मैं गया, जो अलग अलग लेवल होता है, क्या टेम्परेचर होता है, उसके बाद मेरे को पूरा का पूरा क्लैरिटी आया ठीक है, जो मेरा पहले एकदम ही नहीं था, दैट्स द थिंग। Amazing. So support was missing, as you said, right? There was not enough of support as much as you wanted, right? करेक्ट। Before coming to me, uh, करेक्ट। you 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 uh, you found the previous, wherever you were learning the courses, the coaching programs, the mentorship programs, wherever you spent this 1 lakh, uh, you found out the learning to be very different, like it was too bookish, and you found out that it was not being done by real practitioners, right? I'm sure a lot of people can resonate with this because that's how usually a lot of times it happens in the online coaching industry, in general, in teaching industry also. And then you were, it was very complicated, you were not finding it simple before you. So these were your challenges, your main bottlenecks. That's what got you to me. That's what, you kept looking for better things, better people, and then finally you stumbled upon what we do. Fantastic. Let's now talk about, not about your failures, because now you already told people that this is what you failed, but this is now more about what you have achieved and what your future looks like. Okay, on this, what's on the cards for you and what you have planned for the future. So let's talk about that a little bit. And I want you to talk about when it comes to your now packaging your product, right? Your service, your solution that you give to people. How much of solution and product ideation was I able to help you with through my frameworks and methodologies? How much did it help you in packaging your services in one single product, building your value stack? How much did it help you? And what all do you think helped you the most if it did? If you ask me, like honestly, I mean, whatever I have learned, around 99%. Okay, I'm not lying. It is 99% I have learned from you only. And I want to mention one date, which I'll never forget, which is 10th December 2021. Okay, you hit me very hard that day. Yeah. And actually, things keeps on changing after that, because after 1 month I'm able to do those mindset little bit activities, and I got a opportunity to from one community basically, कि वहां पे मेरे को जाना था 3 डे, मेरे को टर्बो लॉन्च एक प्रोग्राम, मैंने वहां पे अराउंड 2023 ऐसे कुछ लोग थे जिनके सामने मैंने प्रेजेंट किया, कैसे एग्जैक्टली प्रेजेंट करना है, वो भी चीज मैंने आपसे सीखा, और इजीली प्रेजेंट करना, एग्जैक्टली Mm. मैं पहले ही जो बताया वो चीज। क्योंकि आज तक भी वो लोग मेरे को ये बोलते हैं कि वो जो आपका जो सेशन था ना 3-4 दिन का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, आज तक भी बोलते हैं वो लोग कभी कभी। Mm. एंड वो चीज मैंने आपसे सीखा। देन उसके बाद वैल्यू स्टैकिंग वाला जो पार्ट है, कि हम ज्यादा से ज्यादा हमको बोनसेस अलग अलग चीज क्रिएट नहीं करना है, एग्जैक्टली आप चीजों को समझो कि उसका नेक्स्ट क्या चैलेंज है जो कि उसको बेनिफिट होने वाला है। मेरा पहले Mm. क्या मैं सोचता था, ज्यादा से ज्यादा हम दे देंगे बोनसेस तो ज्यादा से ज्यादा बिक जाएगा, मतलब सेल हो जाए, बट वो है नहीं, Mm. वो मैंने आपसे सीखा।
कि आप नेक्स्ट क्या चैलेंज है उसको आप पकड़ो। एंड और एक चीज मैंने सीखा जो आपसे, विच इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो होता है, जो कि प्रोटोटाइप, जो सबसे फास्ट आपको लेके जाना है। डेफिनेटली मेरे लिए भी वो काम किया, एंड एग्जैक्टली वही चीज जब मैं करता हूँ ना काम किसी के साथ, Yeah. एग्जैक्टली वही चीज मैं करता हूँ। Okay. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको यही मिलेगा कि आप पहले रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद उतर जाओ मार्केट में, बिक जाएगा, बट ऐसे है नहीं Correct. कहानी। आपको Correct. रियलिस्टिक होना पड़ेगा, लॉजिकल होना पड़ेगा, इमोशन से काम नहीं चलता है हर वक्त। So true. एंड वही चीज है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज वन थिंग। वैल्यू स्टैकिंग कैसे स्टैक करना है, लैंडिंग पेज तो है ही वो चीज, कैसे आपका टॉप नॉच लैंडिंग पेज बनाना है। एंड उसके बाद मैंने और एक चीज सीखा कि आपका जो 1 to 1 में क्या है ना, कि उसको जो जो जिसको हम वहां पे हम खुद को सेल नहीं करते, जो कि डायग्नोसिस हम बोलते हैं, उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है Hmm. उसको जो समझना है। एंड क्योंकि हम जो सोल्यूशन देते हैं वो कस्टमाइज है, वो कोई प्री प्लान नहीं होता है, वो चीज भी मैंने आपसे सीखा। सो आई मीन आई थिंक मेजोरिटी जो पार्ट है वो मैंने आपसे ही सीखा, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया। Right. No, that's how it is. Like I've also learned a lot of things from my mentors, gurus, teachers, right? And I seek inspiration from everybody. And many people that I also learn from, even I invest in my self-education because I think we never know enough. And we should always keep doing that. So yeah, amazing on hearing all the things, listening to all the things that you've learned, that you picked up from me. And I'm glad that these are so many things that you picked up. And I want to highlight on specific things now that you mentioned. Like, for example, you mentioned about you learned also, one of the things that you learned through me is how to present when you were presenting in a group of 10, 20, 25 people. So, and from there, I think you started to get into service, right? Yes, Freelancing. This is where it all started for you. correct, So when correct, you correct. talked about you learned how to present. What exactly in how to present did you learn? What was it? Like, what did help you the most in presentation? What did you learn from me about it? Just about presentation. Yeah, so just about presentation, one thing I learned, which is fancy fail and simply scale. Okay, that's the thing. So keep it very simple, so that कि हम लोगों का जो एग्जैक्ट चैलेंज है, क्योंकि मैंने 1 to 1 किया था, वो मेरे को समझ आता है कि क्या क्या उन लोगों का चैलेंज होता है। तो एग्जैक्टली वही चीज का सोल्यूशन कैसे उसको दे, ताकि उसका लाइफ इजी हो जाए। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट जो स्टेप होता है ना, एक्शन स्टेप्स, मैं उसका बात कर रहा हूँ। क्योंकि Right. हम ज्यादा वहां इधर उधर का बात नहीं करते हैं, एकदम स्नाइपर की तरह एग्जैक्ट क्या करना है वो चीज मैंने आपसे सीखा, वही सारा चीज मैंने पिकअप किया, एंड उनको मैंने रीपैकेज करके वही मैंने प्रेजेंट किया। ज्यादा इधर उधर बात नहीं करना है, एग्जैक्ट एक्शन स्टेप, दैट्स इट। Fantastic. So the biggest lesson for you was before. So that tells me that before learning through me, you used to think that you have to make it very fancy. Like a lot of people have this misconception, right? एब्सोल्युटली। And I cannot stress enough on how important it is to keep things simple, right? Yeah. So fancy fails, simple scales. Okay. So you also mentioned about value stacking in your product ideation, right? And you talked about that how you used to think, it's earlier before you came to me, you had this perception in your mind that when you talk about and I talk about it, right? Even in my podcasts, that bonuses are not like, I asked this question, and I think 8 out of 10 times when I ask people this question, why are you adding bonuses? They don't realize why are they adding bonuses. The most common answer they tell me is because the customer, the buyer will think like he or she is getting so much in this much price. That's the most common answer. And that's where the mistake is, as you rightly mentioned. So what components of it inside our frameworks and methodologies that we talk about inside our mentorship program, what exactly in product creation, solution ideation and creation about value stacking, what principles did you like the most about value stacking, like offer creation and stuff? Any things you can recall that help you craft your product and solution even better, for which people are ready to pay you now? Yeah, so there are basically 3 4 things. Like every time it worked. Okay, that is your time delay. You have to like be very much cautious, and you have to mention within your offer
because how you can different yourself or your product with others. That's the first thing. And सेकंड थिंग इज परसीव्ड वैल्यू, मतलब कोई भी चीजों का ना परसीव्ड वैल्यू होता है, जो आपसे मैंने सीखा। एंड आपका जो ऑफर है उसमें डेफिनेटली ये रहना चाहिए परसीव्ड वैल्यू। अगर बड़ा नहीं दिखेगा तो इट विल नॉट सेल, सिंपल। एंड उसके बाद आपका एफर्ट एंड सैक्रिफाइस, ये दोनों चीज है, ठीक है। एफर्ट और सैक्रिफाइस को अगर हम कम कर देंगे, हमारा जो ऑफर है, हमारा जो वैल्यू स्टैक है, और उसके साथ हमारा जो बोनसेस अगर है, सपोज हम एज्यूम करते हैं उसके साथ, तो दुनिया का कोई भी चीज हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि हम वेग बात करेंगे, जो रियलिस्टिक है, लॉजिकल है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ फ्रंट एंड में हमारा सेल करना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हमारा अपसेल भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है उसको हम इंक्रीज कर सके। तो ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम फ्रंट में झूठ भी बोल देंगे तो अपसेल नहीं होगा, तो बिजनेस बूम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, काम नहीं होगा। वेरी ट्रू। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑफर में मैंने ये 4 चीज को हर वक्त में दिमाग में रखता हूँ। कभी भी कोई जो प्लान करता हूँ ना, परसीव्ड वैल्यू, आपका टाइम, टाइम डिले, ये सारे चीज, आपका एफर्ट एंड सैक्रिफाइस, ये चार चीज बेसिकली। Right. So these are principles that you will find under a lot of different marketing books and material. If you go through the good old legendary marketing materials, and a lot of thought leaders in marketing, people who are marketeers, who are practitioners, talk about it in their own manner. Some would talk about the same things, some would talk about different things, but the end meaning is the same. But yes, like the way I like to put it across is to help you guys understand how do you use these principles to create your product, your solution, right? And then you use that to become an ultimate offer, like people can't say no to. It's like that. And because at the end of the day, the only way you can actually create an impact is when your product is such, right? So because if you will think about, a lot of times, let's talk about that also. A lot of times people understand that, oh my God, I need to give so many things for free so that I can get some kind of, people to buy from me. I'll give products worth 1 lakh for free. You are giving product worth 20,000 for free. I'm going to give products worth 1 lakh for free. So that's the kind of your typical Indian mentality. And then it doesn't work, right? And then they realize, why is it not working? So, and then they come and they have this question, why is it not working? So I want you to talk about this, because a lot of times people have this perception that all that they need to do is have so many things at a less price, and then the sales will happen. So they understand that. And then exactly what you mentioned, which is they make their marketing message so, outrageous, and their promises and commitments and guarantees, because they think that's the way people will click on their ads and they'll buy from them. But when it comes to delivering the product and service, they F up, right? Why? Because they use that just for the marketing hooks and angles, but they did not really plan the product in such a way. So I want you to take over the mic on this, and I want you to talk about that all these people that you have worked with, or I'm pretty sure that you've been on different consulting calls also. These are like 3 clients you're currently working with, but before that, I'm sure you've had many conversations where the deal did not happen, right? You didn't close the deal. So I want you to talk about when you got on such calls where the deal did not happen. Did you see this kind of a problem in the person on the other side? Like, or they were like, yeah, pata hai mere ko marketing ka karna kaise hai, but then you're like, ye bilkul ye samajh nahi raha hai ki product kaise banana hai. ऐसा कुछ हुआ? Product ideation? डेफिनेटली, मतलब हर एक बार यही हुआ है कि उनको बेसिकली यही लगता है हम कुछ भी मैसेज डाल देंगे फ्रंट में, वो बिक जाएगा। बट ये एक्चुअली क्या है ना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। आप कोई भी बिजनेस जब करते हैं, ऐसा नहीं कि 1 महीने या 2 महीने के लिए करना है। एंड आई थिंक 80% to 90% पीपल उस तरीके से सोचते हैं। Correct. कि कैसे हम लोगों को लेके आ जाएंगे, उसके बाद वेबिनार या वर्कशॉप जो भी होगा उसके अंदर हम भेज देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट ये है नहीं ना, क्योंकि आपका अगर और सबसे बड़ा चीज है, हर कोई एक ही कर रहा है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। तो हर किसी के पास लोग जाएगा, लोगों का एक्सपीरियंस भी एक ही टाइप का हो रहा है, कोई अलग टाइप का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली
आपसे मैंने जो सीखा, यहीं पे हमारा अपॉर्चुनिटी है कि चेंज द मार्केट। जो एक्सपीरियंस है वो चेंज करने के लिए, जो कि स्टार्ट ही होता है एड से। जब हम उसको करते हैं प्रॉमिस, बिग बोल्ड प्रॉमिस, ड्रीम आउटकम बेसिकली। एंड डेफिनेटली ड्रीम आउटकम ऐसा नहीं है कि वेग है, ये पॉसिबल है। अब हमारे पास वो कुछ केस स्टडीज है डेफिनेटली, तभी हम वो क्लेम कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। एंड उसके बाद हम उसको जब लेके आएंगे, एक जर्नी के थ्रू हम लेके जाएंगे। ऐसे नहीं Right, है कि हमको हमारा प्रोडक्ट बेचना है इसीलिए हमको लोगों को लेके आना है। इट्स नॉट लाइक दैट। right, right. हमारा जो लोग आने वाला है उनका रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट का, हमारा थॉट प्रोसेस उस तरीके से होगा। ये भी मैंने आपसे सीखा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप शायद मार्केटिंग करते हैं, बट हमारा जब कॉल चलता है ना मास्टरमाइंड, तब वहां पे माइंडसेट का भी बात बहुत होता है, जो कि बाहर में कोई नहीं करते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग मैसेज नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाने के लिए। Yeah. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Amazing. So all these learnings that you got through me about value stacking, MVPs, product Correct. ideation, solution ideation, offer creations, all these concepts and these frameworks, methods that is helping you get results. I'm sure that is helping your clients also to see the Absolutely. results, right? Yeah. So I want you to talk about in regards to the support system. So what is that? What would you talk about the kind of support that you have been receiving from our end, right? What do you think about that? How much role did it play in your success, in where you're growing and your growth so far? And like, what would you want to talk about the support? After joining IMN, I become very much skeptical. Let me tell you why. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे को जो आपसे जो सपोर्ट मिला, डेफिनेटली टीम भी है उनसे भी जो सपोर्ट मिला, एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है ना, कि हम किसी जगह पे जाएंगे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, Yeah, ओवर डिलीवरी हम जो बोलते हैं वो चीज एक्सपेक्ट करेंगे। right. तो मैं कभी भी जब नेक्स्ट स्टेप में मेरा वॉलेट जब निकलता हूँ ना कोई भी चीज खरीदने के लिए, मैं वो चीज सोचता हूँ, वो मैं देखता हूँ, इससे मेरे को ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आपने, मैं सच बोल रहा हूँ, आपका जो सिस्टम टोटल जो आप सिखाते हैं सपोर्ट जो है ना, एक अलग लेवल ऑफ एक जो एक्सपेक्टेशन है ना वो सेट कर दिया, एक अलग बेंचमार्क एक सेट हो गया। Hmm. तो मैं इसके बाद उसी के पास जाऊंगा अगर मेरे को वो दिखे कि इससे ज्यादा मेरे को वहां से मिल सकता है। डिलीवरी जो है, सपोर्ट जो है, कंटेंट तो अलग है, कंटेंट तो बहुत जगह मिल जाएगा, वो अलग चीज है। सपोर्ट जो है वो चीज Right. अगर मेरे को मिलेगा तब मैं वहां पे जाऊंगा। तो एक अलग बेंचमार्क सेट हुआ है। I'm glad I've been able to set that kind of a benchmark because I want people who are in coaching and consulting space, selling coaching programs, courses, mentorship programs, info products, anybody in that space. I want people to think about the support as the key priority. You already know that that's how what we talk about inside our mentorship program with our clients and members. I focus too much on helping them, build support systems, solid support system for their clients and their members and their students. Why? Because the reason I was on this call the other day, we were talking about it with someone. And I talked about that the reason why people are buying courses is not because they lack information or knowledge, right? The reason why they're buying from you is because they want that support and hand holding, probably, Correct. right? They just don't want information. This is not a Netflix show that you are selling, and a lot of people have kind of you know uh, not given a great experience to people, but that's fine. I'm sure that nobody did it deliberately. It just happened. They also did not realize, maybe because they were also new, or whatever happens for good. So I'm glad you picked that up and you liked that support, and I'm glad that you are also taking, I'm pretty sure you're taking that level of support system and importance to how much important how much customer obsessed, one of our pillars, how much Yes. customer obsessed Yes. you should be when you are delivering your service to your clients. So I'm sure that you have that flavor in you Yep. as well, and you're taking Yep. it forward, right? It is just Fantastic. transferring from one end to another end. That's it. Fantastic. What about talk about something to do about, say, media buying? We talk about Facebook ads, Instagram ads, right? Don't leak out the secret methods that we have inside, but just talk about how unique are those methods. Let's talk about that. Have you ever seen such kind of methodologies of media buying anywhere? नो 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 नो, नेवर नेवर, मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा। एंड वो चीज मैं फिर से मैं दोहराता हूँ, जो कि सिंपल है, रेडी, मतलब सिंपल टू इम्प्लीमेंट।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्ट हमको कहाँ मिलेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ना मिलेगा। करेक्ट। तो जो एक्शन स्टेप होगा ना वो सिंपल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने हर एक चीज में, हर एक स्टेप में, हर एक मेथड जो है ना उसमें मैंने वो चीज देखा। एंड ये सबसे बड़ा हेल्पफुल है, आई थिंक। इतना कर पाया उसी के लिए है। मतलब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग फनल के बारे में तो मैंने बोल दिया, क्या मेरे को आइडिया था। अगर वहां से मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये मेरे को पर्सनली लगता है। Fantastic. Amazing. What about the kind of knowledge and experience that you now have and the study material that you have access to and all the frameworks and methodologies that you've learned around media buying, around Facebook ads? How much is it helping you to deliver results to your clients? Like, how much do you think that now people are seeing you as an authority? Because, when you are in a service-based business like yourself, and even for us, when you're a service-based business, people will respect you more based on the kind of results you get for them, right? Like, especially if it's a done for you service, like the way kind of what you're offering. So how much is it helping you in getting your clients the results? How much is it helping you? What are the things that's the helping you the most, like? तो पहला तो बात है कि आपका यहाँ पे आपका जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम के लिए मेरे को एक्सप्लेन करना, उन लोगों के साथ स्ट्रेटेजी सेट करना, ये बहुत इजी हुआ है। एंड उनको ये बताना कि स्टेप बाय स्टेप हमको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि Right. स्ट्रेटेजी होता है, बट स्ट्रेटेजी कितना इजी है ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना Correct. सिंपल स्ट्रेटेजी है ये भी इंपॉर्टेंट And I think this is a है। very और valid point because with service providers, sorry to cut you off, but I want to really say it. With service providers, this is a big challenge because I have done some freelancing projects also in my entire career. It is very difficult to communicate to a client and make the client say yes to what we want to do and why we want to do it, like to convince so the logical side. So yeah, please continue. तो इसीलिए मेरे को और भी ये एनालॉजी जो होता है ना, हर एक चीज हम जो क्यों कर रहे हैं, Yeah. जो ये थॉट प्रोसेस है, ये भी मैंने Yeah. आपसे सीखा कि हम कोई भी चीज जो करेंगे उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा ना, हम Right. वैसे ही नहीं करते। एंड डेफिनेटली हम चीजों को जब करेंगे उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीटेडली करेंगे चीजों को, टू गेट द एक्चुअल आउटकम। Right. तो जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज मैं बताता हूँ कि मैं क्यों सोच रहा हूँ ये चीज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, एंड फाइनली हम क्या आउटकम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो थॉट का जो प्रोसेस है, जो ये कोर्स मटेरियल्स में था, जो आपने जो सिखाया, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प किया। एंड यहाँ पे तो यही मेंटरशिप में एक भी और एक चीज है, जो कि आपका 1 to 1 कैसे हैंडल करना है, ठीक है। मतलब 1 to 1 में कैसे क्लोजिंग करना है, उसके I बाद was I was about कैसे to ask you that. Yes. डीप डाइव, जो मतलब हिडन जो होता है ना, कोई जो उसका जो इंटेंशन है, वाई क्या है उसका, कोई भी चीज करने के लिए, वो चीजों को फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ओपन नहीं होता है ना, इसीलिए ये भी चीज मैंने आपसे सीखा। आई थिंक ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से। So let's talk about that now that you mentioned it. When it's one-on-one calls and you're closing clients, right, for your services, and it's a monthly retail service, of course. Say 50,000, say you are charging more now, say 1 lakh per month, like because it's a kind of the service that you're offering. So how much did you learn the etiquettes of being on a consulting call and then closing clients for your service through me, and the methods that I've shared inside, the psychological triggers and all of that we talk about inside different learning material? How much did you learn? What were the things you learned the most? तो पहला क्या था वो मैं बताता हूँ, जो मैं पहले सोचता था, जो Okay. कि मैंने दूसरे कम्युनिटी से मैंने सीखा था। दूसरे कम्युनिटी से मैंने यही सीखा था, उनको क्या चाहिए ये डायरेक्टली पूछ लो एंड उसको बता दो, ये हो जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं होता है, ठीक है। बट ये एक्चुअली है नहीं। आप जब किसी से भी काम करते हैं, आप डेफिनेटली सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसे काम करें, क्योंकि उनको भी बेनिफिट है, कितना वो भी कितने अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर वो सारे कम्युनिकेशन पहले से ही स्टार्ट होगा ना, जो क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद आप उनसे परमिशन लेते हैं कि अभी हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं इसके बारे में। वो अगर बोलते हैं हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसमें उसको फायदा दिखता है, क्योंकि वही तो वो चाहते हैं ना एक्चुअली, उसका कैसे बेनिफिट हो। तो Yeah. ये जो एटिकेट्स है ये मैंने आपसे सीखा, जो कि मैंने पहले उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम ये चीजों को ना एक जगह से पॉइंट करके दूसरे जगह पे लेके
आते हैं, तब उनको भी समझ लगता है कि हाँ ये सामने वाला जो बंदा है इनको बहुत कुछ चीज आता है, समझ आता है, एंड ये मेरे को हेल्प कर पाएगा। वो जो Right. बिलीफ है वहां पे बिल्ड थोड़ा सा हो जाता है। Mm. एंड फाइनली हमारे पास तो रिजल्ट होते ही हैं, मतलब दिखाने के लिए कि ये केस स्टडीज है, एंड बाकी काम वहां से हो जाता है। तो बेसिकली ये जो एक से जगह से एक जगह कन्वर्सेशन को लेके जाना एंड उसका सपोर्ट के लिए हमारे पास जो केस स्टडीज है, रिजल्ट है, ये दोनों कंबाइन करके, और तो कोई ना बोलने का जैसे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो मतलब कोई मतलब अलग टाइप का अगर नहीं है तो वो जो बंदा पर्सन, Right. क्योंकि पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है अलग अलग, Right. दैट्स। Amazing. There's so much more that I want to talk about because there's so many things that we do inside our mentorship programs, and we talk about so much right inside so that people can do things on their own. What do you think? Like we have a lot of people inside our mentorship programs from different age groups, right? How much do you think out of on a rate of 1 to 10 will people be able to implement what we teach inside so that they get results on a scale of 1 to 10? आई मीन 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मैं फिर से वही मैं बताता हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 2 साल पहले। बट आज मेरे को मीडिया बाइंग आता है, सेल्स फनल आता है। हाँ, हो सकता है मेरे को बहुत अच्छा नहीं आता है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उतना ज्यादा नहीं आता है, वो भी मैं सीख रहा हूँ, डेफिनेटली रीच कर जाऊंगा। बट वो मेरे को आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे क्लाइंट थे जो कि सेल्फ डेवलपमेंट स्पेस पे थे, ठीक है। वो जो फनेल जो पहले आप रन करते थे ना, हाइब्रिड फनेल, वो मैंने Hmm. इम्प्लीमेंट किया और वहां पे सेल आ गया। मैंने आपको नहीं पूछा था, मैं ये वैलिडेट करना था, आपने जो सिखाया कि मैं वो कर सकता हूँ, वहां पे भी सेल आया। तो उससे मेरे को बिलीफ आ गया कि हाँ ये हो सकता है, आपने जो सिखाया है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे रिजल्ट आ सकता है। Hmm. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बट हाँ टाइम डिफरेंट लगता है अलग अलग पीपल के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है Correct. कि अलग अलग का वेरिएबल चीज सिचुएशन अलग होता है हर किसी का। Correct. Correct. Amazing. So, supremely inspiring, man, Supratim. Amazing journey. We will get on the next call when you hit 10 lakh mark, right? And or maybe you do something amazing, right? Which is worth bringing in front of people. So we'll get on another call. Right now, we'll end this call for this for the time being. Thank you for being the way you are, Frank. Thank you for being resilient and never giving up, like carrying that kind of an attitude, because that's what it takes to win. There's so much more that I want to talk about, but on the next call, I'm sure we will have a lot more to discuss. For all of you guys who are watching this video, I want to request you that if you like this video and this inspired you on how the journey, in a brief, how Supratim explained his journey, then I want you to please like, subscribe, share, comment, because so that you can see more of such videos in the future, that we keep publishing of all the client case studies that we get of Supratim being a service provider. Then we've got many coaches, many consultants, many agency owners, and a lot more coming, success stories and case studies coming in the future, so that you can be notified. So maybe you hit that bell icon, subscribe, and thank you for watching. We're going to see you inside the next video. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah. I'm going to pause the recording. Yeah.